Good morning, children. Today we will continue with our chapter United Nations. Today we will learn the various agencies of United Nations. Beta, today we will learn agencies of United Nations. In short for UNO. Beta, the first agency is UNESCO. Dear students, UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Yes, beta. UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific, Scientific and and cultural organization and cultural organization. Dear students, this agency of United Nations promote education, scientific temper and culture on international level. Where it promote international cooperation in the areas of science, education and culture. This agency also promote human rights. This agency also promote human rights in the world. And where is its headquarters? Its headquarters is at Paris. Its headquarters is at Paris. Beta, second agency of UNO is UNICEF. Beta, this full form of this agency is United Nations National Children Emergency Fund. United Nations International Children Emergency Fund. Beta, this agency of United Nations was formed after Second World War. Beta, this agency deals in children, children protection and their development. Beta, this agency of UNO deals in children protection and children development. And this agency UNICEF also try to reduce the death rate among the children. बेटा डेथ रेट बहुत ज्यादा है, बच्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन क्या है ड्यू टू सब किसी बीमारी के कारण से उनकी छोटी उम्र में डेथ हो जाती है. बेटा that's why this agency try to reduce the death rate among the children, and this agency also promote basic education among boys and girls. Whereas this agency also try to promote basic education among children. And UNICEF try to bring the death rate among the children by giving vaccination and antibiotic. By providing vaccination and antibiotic, this agency try to reduce the death rate among the children. The next agency, the name of next agency is WHO. आपने इस पेंडेमिक में अगर न्यूज सुनी होगी तो आपने WHO का नाम जरूर सुना होगा न्यूज में. WHO stands for World Health Organization. WHO stands for World Health Organization. Yes, WHO stands for World Health Organization. This agency of United Nations try to
health care facilities on international level. बेटा this agency of United Nations launched campaign against various diseases. कैंपेन मतलब उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर लिया कि कुछ बीमारियों को खत्म करने के लिए कि हम इन बीमारियों को खत्म कर ही रहेंगे, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया. And बेटा this agency also provides have financial help to various countries to eradicate these diseases. बेटा ये जो WHO की ये एजेंसी है अलग अलग कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करती है, अलग अलग डिजीज फाइनेंशियल हेल्प कैसे देती है कि वो अपनी कंट्री में से बीमारियों को इरेडिकेट करवा सके, लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन वगैरह दे सके. ताकि बेटा आप लोगों ने भी पल्स पोलियो की ड्रॉप्स पी थी ना, और उसमें आपका कोई चार्जेस नहीं लगता था. बेटा वो भी जो WHO ने इंडिया को फंड दिए थे कि आपने अपनी कंट्री में से क्या कहते हैं पोलियो को इरेडिकेट करना. दैट्स व्हाई जो पोलियो की जो ड्रॉप्स है वो आप लोगों को फ्री में भी लग जाती है. बेटा नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट एजेंसी इज FAO, Food and Agriculture Organization. Food and Agriculture. Yes, beta. Next is Food and Agriculture Organization. Beta, the main function of this agency is to fight against hunger and malnutrition. Hunger means भूखमरी, कि कोई लोग वर्ल्ड में भूखे ना मरे. एंड malnutrition, बेटा malnutrition का मतलब होता है कि कुछ लोगों को खाना तो मिलता है लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती. जैसे एक ह्यूमन बीइंग को पर डे में 2400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको 2400 की जगह 1500 या 1800 कैलोरीज मिल रही है. उसकी वजह से वो इंसान मरेगा तो नहीं, खाना मिल रहा है लेकिन काम मिल रहा है उसकी वजह से मरेगा तो नहीं, लेकिन वो इंसान क्या हेल्दी होगा? क्या उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी होगी? यस दर्श होगी उसमें? कनिष्का नहीं ना. सो बेटा दैट्स व्हाई द मेन फंक्शन ऑफ दिस agency of United Nations is to fight against hunger and malnutrition. कि वर्ल्ड में से भूखमरी को और कि कोई भी हर इंसान को पौष्टिक खाना मिले, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है. द एक्सपर्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बेटा एडवाइस गवर्नमेंट ऑन मैटर सच एज मेथड्स ऑफ बेटा yes, the expert of this organization give advice to the government how they will do farming and so that they can increase their production. The organization also distribute food supply to poor people in all parts of the world. This organization, this agency also try to provide food to poor people in all the parts of the world. कोशिश करती है कि वर्ल्ड के सभी हिस्सों में जो लोग बहुत गरीब है उनको खाना मिल सके. Next is बेटा ILO. ILO stands for International Labour Organization. International Labour Organization. बेटा as its name suggests, this agency of United Nations try to improve the working condition of
all the men and women. Working condition mean कि हर आदमी के काम करने की जगह का एटमॉस्फेयर अच्छा हो. All the men and women get equal wages for equal work. There is no discrimination in wages on the basis of sex. कि एक आदमी है इसलिए उसको ज्यादा वेजेस दो, एक औरत है उसको कम वेजेस दो. ये देखते हैं कि इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो. वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉइज शुड बी फिक्स्ड, कि काम करने के जो घंटे हैं वो निश्चित हो. ये देखना किस एजेंसी का काम है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम है. बेटा नाउ वी विल डिस्कस अचीवमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. क्या आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल है? डू यू, आपके अकॉर्डिंग क्या है, यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है? रेज योर हैंड. यस बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स present in the class are saying that United Nation is successful. Beta, we can say that United Nation is successful. The reason is that in 1945 this organization was established to promote world peace and security, and this organization was successful in its objective. And beta, this organization, अभी तक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाया हुआ. ठीक है ना? टू स्टॉप, टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम फ्यूचर वॉर. बेटा ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव में यूनाइटेड नेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है. सो वी कैन से दैट यूनाइटेड नेशन इज सक्सेसफुल. एंड बेटा वेरियस ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वेरियस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन doing excellent work, especially UNESCO, UNICEF and WHO. But all the agencies of United Nations are doing excellent work for humanity and to eradicate various type of diseases. So we can say that United Nations is successful. Now we will discuss India and the United Nations. Beta, India, the main aim of our foreign policy is to establish peace, and the main aim of United Nations is also establish aim. So India has full faith in United Nations policies and program, and beta India has good relation with United Nations. India always sends its soldier for peacekeeping operation. बेटा पीस कीपिंग ऑपरेशन कैसे होता है? यूएनओ की अपनी कोई सेना नहीं है. मोर देन 200 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. बेटा क्या हर कंट्री अपने कुछ सैनिक हर साल यूनाइटेड नेशन में भेजती है? ठीक है, हर कंट्री अपने कुछ सैनिक हर साल कहाँ भेजती है? यूनाइटेड नेशन में भेजती है, और वो क्या बन जाती है? यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स बन जाती है. हर साल भेजती है. हर साल मतलब क्योंकि बेटा वो एक साल तक अपनी कंट्री से दूर रहते हैं, फिर उनको वापस बुला लेती है और फिर दूसरे सैनिकों को भेज देती है. तो बेटा ये जो पीस कीपिंग जो फोर्स होती है यूनाइटेड नेशन की, वो जो देश यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानते और गलत तरीके से दूसरी कंट्री के ऊपर हमला कर देते हैं या बिना किसी कारण के हमला कर देते हैं, तो वहां शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग जो फोर्स है वो भेजता है. बेटा दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा इंडिया ने भी अपने जो मेंबर्स हैं वो हमेशा पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए भेजे हैं इंडिया. एंड बेटा एवरी ऑर्गेनाइजेशन रन्स विद द हेल्प ऑफ मनी. एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड टू रन इट्स वेरियस फंक्शन. And beta India also submit its fund on time. Always submit its fund in on time in UN. And so we can say that India has good relation with United Nations. India is demanding permanent seat in Security Council because India is world largest democratic country and India is second in population in world. Soon India will be on first place. That's why India is demanding permanent seat in Security Council. लेकिन अभी इंडिया की जो डिमांड है वो पेंडिंग चल रही है, लेकिन इससे इंडिया और यूनाइटेड नेशन के रिलेशन में कोई फर्क नहीं आया है. इंडिया हैज
always faith in United Nations policies and program. भारत का हमेशा ही यूनाइटेड नेशन के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम में पूरा पूरा जो विश्वास है वो रहेगा. Now we will revise some one word question or 2 marks question from this chapter. And raise your hands also. But look at the read to know given on a page number 134. But the UNO flag has a light blue background. बेटा UNO का जो फ्लैग है उसकी लाइट ब्लू बैकग्राउंड है with its symbol at the center. और बेटा इसकी लाइट ब्लू बैकग्राउंड के पीछे बीच में सिंबल है. And what is its symbol? World map. And on the world map, on the both side there is olive leaf. Olive बेटा olive plant पीस को शांति को इंडिकेट करता है. तो इस मतलब इसके फ्लैग का मतलब क्या हुआ? बीच में वर्ल्ड मैप और साइड में ऑलिव इंडिकेट पीस. इट मींस पूरे वर्ल्ड में शांति को स्थापित करना. क्लियर बेटा? And बेटा who was the first female president of General Assembly? Yes, Samya, give the answer. Yes, Shrimati Vijay Lakshmi Pandit was the first woman president of General Assembly. Better now, yes, Dash. When was United Nations formed? Yes, but United Nations was formed after Second World War on 24 October 1945. But which organization was formed after First World War? Which organization was? Yes. Yes, but the League of Nations was formed after the First World War, and after Second World War, United Nations was formed. But when was United Nations formed? Kritika, give the answer. Kanishka, sorry, give the answer. Yes, United Nations was formed on 24 October 1945. But all the students also write correct answer in chat box. Okay, write the answer in chat box. When do we celebrate United Nations Day? Yes, beta, Samya. No, only 24 October. Beta, every year we celebrate 24 October as United Nations Day because on this day, United Nations was formed in 1945. Yes, beta. Kanishka, beta, name the 5 permanent members of Security Council. Beta, 5 permanent members of Security Council. Write the answer in chat box. Yes, Dash. Yes. There are 5 permanent members in United Nations. First is USA, second is UK, third is Russia, fourth is France, and fifth is China. There are 5 permanent members in Security Council. How many non-permanent members are in United Nations? Yes, Samya. Yes, there are 10 non-permanent members in United Nation. Yes, Kritagya, good beta. But आपने एक कंट्री का नेम छोड़ दिया है. रशिया का नेम आपने मिस कर दिया. You write the name of 4 permanent members, but there are 5 permanent members. आपने रशिया भूल गए आपके. Yes, beta. And all the 10 non-permanent members are elected for the time period of 2 years only. Beta, who used the word United Nations first time? Yes? No? Beta, American President Franklin D. Roosevelt. American President Franklin D. Roosevelt first time used the word United Nations. Beta, Hanji.
Where is headquarter of General Assembly? Yes, the headquarter of General Assembly is in New York. Next is, beta, how many judges are International Court of Justice and where is its headquarter? Yes. And where is its headquarter? Yes. Beta, very good, Kritagya. Beta, rest student also write the answer in chat box. Beta, there are 15 judges in International Court of Justice. There are 15 judges in International Court of Justice and beta, its headquarter is in Netherlands Hague. Yes, beta. Who is head of Secretariat? Who is head of Secretariat? Yes, beta, raise your hand for the answers. Write the answer in chat box also. Yes, very good, Dash. Secretary General is head of Secretariat and Secretary General is appointed by General Assembly for the time period of 5 years. For the time period of 5 years. Beta, next question is, which organ of United Nations is not working at present? Which organ of United Nations? Yes, not working at present. Trusteeship Council. But United Nations का trusteeship council at present work नहीं कर रहा है because trusteeship council was formed to look after the needs of 15 non-independent nations, but at present all the nations are independent. That's why trusteeship council is not working at present. Yes, beta. Where is headquarter of UNESCO? Where is headquarter of UNESCO? Yes, beta, the headquarter of UNESCO is in Paris, France. The headquarter of UNESCO is in Paris. Beta, which agency of, very good, Kritagya. Yes, beta, rest students also write answer in chat box. Beta, what is the full form of ICJ? What is the full form of ICJ? Yes, ICJ stands for International Court of Justice. ICJ stands for International Court of Justice. Beta, next, move on next question. Beta, which agency of United Nations working for children development? Yes, Dash. UNICEF. Yes, United Nations Children Emergency Fund Agency is working for children development. Beta, name the 6 organs of United Nations. Yes, Samya. Yes. Repeat the 6 organs of United Nations. Yes. General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat. These are the main organs of United Nations. Beta, today at 5:30 p.m. your third revision test will be conducted on Teachment app. So learn the chapter 16. Let's keep in touch, and chapter 22, the United Nations properly, and do practice of math work.
and tomorrow we will do practice of map work. So हर बच्चा अपने साथ मैप लेकर क्लास में बैठे. Thank you and have a nice day.